आप इमोशनल इंटेलिजेंस से क्या समझते हैं? ऑफ कोर्स आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, सो मैं तो काफ़ी कुछ समझती हूँ और प्रैक्टिस भी करती हूँ और गाइड भी करती हूँ, एंड आई हैव अ क्लिनिक ऑल्सो, मोस्ट ऑफ यू नो दैट. बट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इमोशनल इंटेलिजेंस? The word emotional intelligence. It's okay, sit and talk. You can turn around. You don't get it, okay? Raveen ji? Emotional intelligence, as per my understanding, it is ability to control our emotions as well as knowing others' emotions, how to take care of or how to control or change our behavior. So, Okay, as per Raveen ji, it is knowing our own emotions and being able to control them as well as adapt to other people's behavior, control our reactions towards them. Yes? हाँ, ओम जी कहते हैं वो पॉसिबल नहीं है. ओके, we'll come to that. emotions is the heart. Emotions is the heart. Yes. And intelligence is the brain. I think heart is more important than the brain. वाह, कंक्लूजन आ गया है वहीं पर. आई थिंक द हार्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द ब्रेन. आई लाइक दैट सेंटेंस, आई लव इट. यस, जय. That's what I've concluded. That's a lovely one. That is the most safest sentence you can speak over here. Yes, Jay. He likes to play safe. He's a finance person, na? So, yes. इमोशनल का एडिक्ट, मतलब ऐसा इमोशनल है तो मतलब थोड़ा भावनात्मक होके कंट्रोल नहीं. Okay, you are very addictive towards your emotions. Okay, so you're not able to control your reactions. Cool. That's a very fair and a very frank statement to give. Very few of us are able to say that we are very emotional and we are not able to control them. We say, no, we are always in control of ourselves. Yes, we always say that. Yes, Suresh? Moreover, it would be related with some behavior. Okay, so you think this title is related to some behavior related stuff. Okay, wow. It will be a very important topic for you in future because you are going to become an HR person, and human resource and psychologists are people who are, you know, expected to be knowing this topic in and out. We'll discuss that. That's why we are talking about professions over here. Lisa, what's your take on that? Managing emotions, wherein you control your interactions and reactions. Right, in a very crisp manner. Managing your emotions. We have various types of emotions. There's a very famous psychologist by the name of Esther Hicks. He says there are 22 kinds of emotions, but we are going to talk about just the very simple 7 kinds of emotions which are there out there, and how we can, you know, rest of the others are part of it somewhere. So how do we manage them? How do we maneuver them in our life? Bharat, you'd like to share something? Okay, Annabelle, anything on emotional intelligence? Yes? Getting excited. Okay, emotional intelligence is getting excited more. Okay, okay. The mind and soul. Understanding the mind and The mind. mind and soul. Okay. Being aware of your emotion, at the same time understanding others' emotions. Okay, that's a very smart one. Being aware of your own emotions and understanding other people's emotions. Empathy. Yes? Understanding yourself and the third party. Okay, okay. And able to deal such a way so that there is no conflict. Okay, so it is certainly a very, very idealistic understanding. We do have it, yes. Well, I think that when you want to handle situation or a group, you have to understand the emotions. उसके अंदर में क्या बोलना सबसे पसंद है, क्या बोलने से काम में हो सकता है, how to make that क्या steady. Okay. Everything connected. Okay. Nikhil, what do you feel? Controlling your tongue. Controlling your tongue. Communication. Yes? That is emotional intelligence. That's where the emotions first gets involved. Then your behavior, then your action. Okay. Nikhil says that emotions get manifested through your tongue first, then your behavior, then your actions. Okay? Yes? Oh, that's okay. ओम जी, बी हैप्पी. हमारा हमेशा का एक मोटो जो है वो ओम जी से आता है, शॉर्ट एंड स्वीट. बी हैप्पी. यस, most of the professional organizations are investing a lot of money on this topic these days, emotional intelligence, because some way or the other we get our motivation and fuel for working when we are emotionally happy.
Because most of the things which we do in our life are in some or the other way connected to our emotions. For example, a higher pay certainly has a rational relevance to your expenses, कि आप कितना खर्चा करते हैं, कितना आपको ज़रूरत है, but it also has a lot of correlation to your internal feeling about yourself, your self-esteem. आप जब कुछ कमाते हैं या आपको कोई पैसे मिलते हैं per month, या there is an earning which you take home, there is certainly a high which you get a hype inside, you feel good about it. Do we or not? Yes, all of us. So certainly whenever that pay is going to diminish or it's going to completely disappear, it is going to affect your emotions. If that pay does not get a due hike, which we call appraisal, bonus, then also it gets affected. Now if that pay in comparison to another person is less, then also you get an emotional low. So this is a very small example I am giving you. Money, we say, is not everything, but money is an important part of our life, and we base a lot of pleasures and lots of self-esteem related things with money. We correlate it. You know, being spiritually inclined is not something which is missing in us. It's not like that, but it's that the needs which we have to fulfill, the expectations which we are, you know, we have to take care of from our family, from our wife, children, our own selves, those are all related to our emotions. So currently emotional intelligence is being given more importance than IQ. That is your intelligence which comes from your performance, your technical knowledge, your background, your studies. So that's why the research says that 85% people who are success are known to be very high on EQ. And only 15% of it is accruing to IQ, which all the while we have been given a lot of importance to. Oh, iska IQ बहुत high है, इसलिए वो बहुत successful है. Actually, that's not the case. The case is that the other person whom you're finding very popular, well-known, accepted, a nice boss, a nice worker, a nice student, friend, colleague, Facebook colleague, whatever, that person certainly is very good on EQ. He knows how to understand, express, deal with the thing, with the most basic thing called emotions. Yeah? So I thought let me share this. And yes, we are also going to talk about these distressing emotions like anger, bitterness, resentment, dissatisfaction, unhappiness, so many things, you know, sadness, grief. These are all negative kind of emotions which are still part of our life. And how do we handle them? EQ is the distinguishing factor when you see one person more popular in your group than the other. So many times people wonder, why this person is so popular, why is he a celebrity, why is he 2 steps ahead of you. So more than the IQ, that person's EQ gets the credit for it. So that distinguishing factor between 2 people, even though they can be from the same family, they can be from the same background, 2 MBAs, from the same university, IIM, or maybe A school or B school. Yet one can be very successful, the other may just be mediocre. The reason can be EQ. How that person has managed his relationships, how that person has managed the references, how that person has not hurt or not been unpopular in his entire career. Taken decisions, yet not braised somebody's ego. Taken decisions, all of us take decisions, but some of us take them in such a beautiful manner that we still are in good touch with people. We may not be saying yes to every need, but still we are saying the no in a manner that the people accept it and are still our very good friends to us. So that is a distinguishing factor. EQ is the distinguishing factor which draws others to us or repels. Some people you don't just want to gel with, you don't want to go and meet, you don't want to go and say hello to them. So there's some part of an emotional involved over there. Maybe you don't like that person, maybe that person gives you a threatening feel, or you don't feel enough respected with that person, he doesn't give you enough importance. Many reasons, you know, maybe that person is too sharp on tongue. Ego in the sense that there is a particular emotion and you don't accept. Maybe you don't like the fact that he is having more money or more higher status or is more sharp.
slightly, very sharp on tongue, able to immediately witty give you answers, and you are not able to do it. So you compare yourself, or you compare some other person, and you don't like that person, so you get repelled. You don't want to be around that person. That person comes and you go away. You move out. If you just go back in your own circle, there are certain neighbors, there are certain colleagues. You don't want to be around them. You just, please, just keep me away from them. Some colleagues, some old friends, though you like them, yet you don't want to be around them. For maybe 1 minute, 2 minutes, you'll say hello, hi, but you'll not really socialize with them. Some relatives of ours, many of our relatives also, so they repel us because of their EQ. It is a distinguishing factor where coordination is related, and that's why most of the organizations are focusing on EQ. Coordination in the meaning of there are different departments in every organization. Finance, HR, marketing, sales, then there is operations, admin, different departments. They all need to be coordinated. You have to coordinate with them to bring out results, to bring out business. A simple thing like even in the house, the lady of the house needs to be very strong on EQ so that she can manage the vendors, the maid, the relatives, the family, her husband, her children. So the woman is expected to be more high on EQ compatibility. And women are very high on EQ many ways. If you see, women are very good managers. At home they are able to do so much of multitasking. So if the woman in your house is not able to manage those things, many things go wrong. Many relatives don't want to visit you. You don't want to go to someone's house because she doesn't like it. You don't end up in a particular company because the woman in your house doesn't like it. You don't enjoy it anymore. In the same way, in the office also for professionals, when a particular department is not coordinating properly, your things go wrong. It can even be in your normal life, place where you put in your bills, electricity bill, telephone bill. They are different departments. You need to coordinate with them. You have to, even the temple का मंदिर का जो पुजारी है, अगर वो ठीक से आपको स्माइल करके नहीं ग्रीट करता है, प्रसाद नहीं देता है, you don't like it. You don't, even if it's a दूध वाला in the corner of your shop, even that is a matter of coordination. You don't like it. If your maid is not coordinating with you or the कामवाली is not coming on time, press वाला आपसे 5 रुपया ले रहा है, दूसरे से 4 रुपया ले रहा है, you don't like it. There's some issue in coordination. So coordination is a factor which is an after result of our EQ. That's where we win hearts. How do we look at people? How do we distinguish? Some of us are very, very good on knowledge. We have a lot of content over here. We read a lot of things. And that knowledge sometimes makes us travel high. We lose our humbleness. We forget to smile at people. We want to be addressed as madam, sir. We expect those addressals on the basis of that we are PhDs or we are doctors or because we are in a noble profession like medicine or giving education, many things. So, but that does not help us to win hearts. You will find some of the professors in the college or school teachers in the college who are though not very high on degrees but very popular. Very popular. The students will go with their small problems to them. If you just go back in your life, just turn the pages of your life, you will find many such people who are heart winners. They'll talk to you and they win you. Their genuineness, their smooth way of talking, their way of acknowledging you as you are, just wins your heart. You smile at them between strangers. In crowd also you may not remember their name, but you will still smile at them. That is a distinguishing factor which we call EQ. It is not a very uncommon trait. Many of us have it. Many of us, we are not able to recognize it and build upon it. It's a learnable trait. It can be learned. If you're not good on EQ, you often have conflicts with people. You're not popular among your people. You're not a person with whom people want to relate. You can learn EQ. EQ can be learned. The another emotion which so many times I tell you about is fear in so many of my sessions. Fear is a learned trait. Fear, which we teach children, which we learn ourselves. We see horror movies and learn fear. We don't realize it.
हम बच्चों को डराते हैं, बेटा वहाँ मत जाना, बाबा ले जाएगा, तो हमने सिखाया है फियर। उसी तरह से EQ जो है वो भी सीखा जा सकता है। इट कैन बी प्रैक्टिस्ड, इट कैन बी मेड अवेयर, इट कैन बी आइडेंटिफाइड इन योर बिहेवियर। It's a proper BMT training, it's a proper behavior modification technique training wherein you can become a better EQ person. There are trainings available on it, there are classes available on it. The right qualified people who have been doing it for many years, they can teach you how to be more emotionally efficient. So that's the reason why I thought let me take up this topic today. We've talked about this, it's the ability to accurately identify emotions, जो आप लोग ने खुद भी मुझे बताया. Yes, समझना, पहचानना और फिर उनको मैनेज करना. For example, if I share with you my example, I am not very comfortable with crowds. Now by crowd I mean the train crowd. I don't mean ये तो मेरी favorite crowd है. Being a psychologist and a trainer, this is my favorite crowd. I manage even 150, 200 people at a go. Lekin I'm talking about that crowd which pushes you, which bumps you, which unnecessarily puts you in one train and makes you get off the other train. Well, it has happened with me so many times कि मुझे उतरना बोरीवली में है और मैं उतर गई कांदीवली में. Why? Because I was standing on the wrong. And I learned it after a long time, you know, after around 1 or 2 years I learned. But by that time I was like in a kind of a fear of crowds. I don't want to be around crowds unless it is very necessary. Now knowing this fear of mine, in the trade where I am, it is not mostly required to travel a lot by trains. We travel a lot by cars. We go to organizations, give our trainings. Or if I'm going for a session, people send cars, we go, it's okay. So it's a very comfortable travel for me, but yes, sometimes I need to. So knowing this emotion of mine that I don't like traveling by trains where it is very crowded, how can I do my managing? Is there a way I can do my managing? Come on, all of you must be in Mumbai traveling by trains. Come on, Nikhil, suggestions. Om ji keh rahe not possible. थोड़ा जोर से बोलेंगे निखिल. There are certain specific trains for your specific destinations or timing. So you accordingly go out by that timing, or you can take a road transport. That's best. I mean, I use a road transport, same thing. Timings. A very interesting statement he said, timings. Yes, I maneuver my timings quite a lot, and that's a very interesting part where I don't end up in, you know, wrong kind of traveling. I end up in a very comfortable traveling. I set up my meetings in a manner where I don't end up in peak hours traveling. That's a very interesting part. What else? Anybody else can suggest? Jay? There's hardly anything to choose in timings. If somebody's giving you 10 o'clock and you then, I don't know. That's a very, very interesting statement. I like that statement, you know. In India, we are not taught assertiveness. Yes? So what we do is whenever someone else picks up a meeting time, we always say yes. And believe me, there's one lady sitting over who's worked with me. You can ask her. I will never say yes to such things. And that's why I say that I'm a perfect one to give you emotional intelligence. I don't say yes where it is not required. I will not say yes where it is not making me happy as well. I know I may be losing a little bit of business. I may be losing your goodwill, or maybe you're getting angry with me. But that's short term. In some days, if you need my expertise, you know that Nimisha is the right person, you will come back to me and you will fix a meeting in a manner that the timing is as per both of us. It is not that the other party is only the one who's giving us benefits. We are also giving benefits to them. How is your self-esteem? Self-esteem आपकी कितनी low है कि आपको जो अच्छा नहीं लगता उसके लिए भी हम हाँ yes कहते रहते हैं. We brace our souls. I always say, you know, we are actually causing harm to ourselves when we say yes where it is not required. In India, we are taught humility in a wrong form. We don't say no to beggars. दे दो 10 रुपए. और आपको पता है वो करोड़पति होते हैं beggars. उनके पास हमसे ज़्यादा खोलियाँ हैं, हम तो रेंट पे रहते हैं. Yeah? Am I right or not? Come on. Don't you get to know you these beggars who are there, who are near your car, near your vehicle, asking for money? They are richer than us. Begging is a profession for them, and they play with our emotions. We feel guilty if we are not giving 10 rupees. Yes, they are more EQ efficient than us.
So I thought, let me give you my own example. How do I manage my meetings? And how have I managed past 13 years of my profession? It cannot be without saying no. I say no where it is required. I say no to my patients also now, when I'm not able to meet them, when I'm not able to give time to them. The greed is not that that patient will come only to me. The greed is that that patient will set a timing with me and understand that this lady is going to work as per a mutual understanding. I will not set across my time only, it has to be your and my time. If you talk to anybody in my circle, you can even verify this, that Nimisha will always give suggestions. So EQ efficient people give suggestions. Can I contradict this? Yes, please. See, you are in a business where it's a mutual, like one-on-one, and some niche is there. Come to a competitive product or a service, and there are 100 people standing behind you. Right. तुम 10 बजे मैं 10 बजने के 5 मिनट पहले पहुंचता बोलो. Right, so it's okay. So you know, That's okay. It's like getting into competitive industry. Yes. Then बहुत लोग ऐसे आधा घंटा पहले दरवाजे के पास खड़े रह जाएंगे. Lovely. So you have to make yourself comfortable. What industry are you so dominant? See, in industries there are people who say पहले पैसे दे फिर dispatch करता हूँ. बहुत जन बोलते 1 साल के बाद भी माल दे चलेगा मेरे पैसा मेरे को 1 साल बाद दे. And yeah, Jay, I still know such vendors who will not give pehle paisa. I still know such psychologists who will ask for your suggestion and give you time. I still know such trainers in my own community who will set a time with you. It is not succumbing to what you're getting very desperate about, business. Which is always, if you say that you are running ahead of everybody by giving 5 minutes more, or then you're doing conditioning. You're doing false conditioning on other people. And then you are only cribbing about it, ki, oh, I never get to do what I want to do in life. Who has said these things? The question is not of survival. Believe me, there's enough in this universe which is going to let you survive. We say there's enough for people's needs, but it's not enough for people's greed. Okay? Survival to anybody on the road also can survive. Yes. Even growth. Whom are you competing with? Are you competing with unethical people out there? Are you competing with people who are ready to do anything for business? Then our examples are different. Boss, don't compare me with yourself, Jay. I don't want to be there. Believe me. Ethics, timings, assertiveness is part of your professional life. We will not complain a lot if we are aware that we do not practice assertiveness and we need to bring it in ourselves. जब हम ना कहना नहीं सीखते हैं तो हम कई गलत जगहों पे ना कहते हैं और हाँ नहीं कहते, और जहाँ हाँ कहना है वहाँ ना नहीं कहते. You have to learn this. It's a very faulty behavior in India. We have been practicing this for many years. It's not going to be easy. I tell my clients, I tell my participants, मैं अपनी ट्रेनिंग में भी इसको propagate करती हूँ. अभी के gain के लिए do not condition the other person into false behavior. You are conditioning them. They are not conditioning you. You say yes to somebody against your emotional feeling. Tomorrow, he is going to get on your head. He's going to demand you more. There's a simple thing, I'll tell you. Like in our profession, psychology side, we have a particular fee. All of us have a fee. We have a particular fee. Now, if you go beyond a particular discount, a person even wants you to do it for free. Yes? Now come to the training part, where I'm an MBA HR from past 12-13 years and I deal with a lot of corporates. We have a particular fee for a per day training. Now if you say yes to a particular fee once, even Lisa is from that industry. Listen to what she's saying. Yeah, then expectation is always the same, you know. The Nimisha comes only in this. So that spreads in the market and that's what you get. So I never blame the other person. My understanding of identifying emotions comes from myself. I have conditioned the other person how to deal with me. There's a concept called mindfulness. Are you aware of mindfulness? All of you over here, if you are a little bit computer savvy, please go on your computers and type mindfulness. You will understand what it is. It is growing from within. Growing from within. Many of us come from very good families, environment, and we are taught mindfulness from our family structure. We do not do any kind of faulty compromises with our work culture. We are assertive beyond teaching. We have it naturally.
Nobody has taught me assertiveness. Maybe I'm a natural assertive and emotionally intelligent person. But yes, I'm seeing a lot of benefits out of it. Nobody is taking me on a ride. I am aware of my own faults. I don't blame the market. I don't blame the business. And I will not blame other people for what's happening in my life. It's actually, if you look inside, it's your own behavior which is conditioning other people to behave in a particular manner with you. You take a kind of behavior today, okay? Tomorrow that same thing is going to be repeated with you. All the while. It's not a matter of getting, there is a very thin line between aggressiveness and assertiveness. People think that people who say no are aggressive. It's not like that. You have to say it in a manner where you do not disrespect the other person and your point is also clear. Yes, you may lose business. I said this in the beginning also. Initially. But once, like Aamir Khan works only one movie in a year. Is he dying? Is he not surviving? Come on, tell me. Is he not successful? Ravinji? He's successful, but actually it depends on this situation also. Means he is in film industry. Now the situation is responsible. Pehle market was responsible, now situation. Yes, bataiye. If he is in a competitive world, then he has to be on toes and compromise. No. We are not talking about being on toes. We are talking about identifying our emotions rightfully and being able to exercise them. अगर मुझे किसी चीज़ में परवरता नहीं है आपसे काम करना तो मुझे वहाँ पे ना बोलना और अपनी बात को एक्सप्रेस करना आना चाहिए. और यहाँ पे मार्केट, आमिर खान, सेलिब्रिटी, इसकी किसी की गलती नहीं है. यहाँ सिर्फ हमारी अपनी बिहेवियर की गलती. Enjoying one movie. He's working, yeah. Yeah. He's working in one movie and he's enjoying it. Yeah, let's compare it with a similar person, Hrithik Roshan. He also tried to do similar mischief. I will do one movie. Where is he? 5 years I hardly see any movies. So do you know Hrithik Roshan personally? No, I'm trying to compare. I have met Aamir Khan personally on 2-3 times at the airport. देखो उसकी ad में ही आ रही है. hrithik Roshan की कोई हाँ. नहीं आ रही है. Other than his own father, nobody is producing it, directing it. What I'm trying to say is, I would say he should be thankful that at least his father is directing him and producing him and his movies are going in international forums. शाहरुख खान की कोई मूवी इंटरनेशनल फोरम्स में नहीं जा रही है, किसी भी इंटरनेशनल जगहों पे स्क्रीन नहीं हो रही है. अगर गलतियां निकालने जाएंगे जय, I am just trying to, everybody cannot be that successful in that attitude. I am just okay with that reaction of yours because that's called denial and resistance in behavior. आप कितने साल के हैं जय? 40 साल की उम्र तक आपने एक बिहेवियर प्रैक्टिस किया है. मैं नहीं एक्सपेक्ट करती कि आप एक आधे घंटे के सेशन में इस बिहेवियर को मॉडिफाई कर लेंगे. और असिस्टेंस दीजिए, मेरे से हेल्प लीजिए, बात करिए, चैट करिए. आप तो मेरे साथ ऑनलाइन चैटिंग पे हैं, क्वेश्चंस पूछिए, आई विल हेल्प यू आउट विद दिस. There are people around me who have modified their behavior and they have changed their behavior and they are very happy with learned behavior of emotional intelligence. So believe me, अगर हम किसी faulty behavior को सालों से practice कर रहे हैं तो वो सही behavior नहीं हो जाता है. Just because we are used to it, we are comfortable with it, doesn't mean that it's okay. For example, मैं आपको एक छोटा सा example दूँ. पहले के ज़माने में बच्चों को घर पे मारते थे, पिटाई करना नॉर्मल बात थी. हमारे काफ़ी सारे ऐसे बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने बहुत मार खाई है बचपन में. आज वो क्यों चेंज हो रहा है? बिकॉज इन बचपन में वो लोग कुछ रॉन्ग मिस्टेक करते थे. आज क्यों चेंज हो रहा है? आज क्या रीज़न? आज बिकॉज मिस आज आपको हर गलती के लिए आपकी मम्मी थप्पड़ क्यों नहीं दे देती? बताइए क्या रीज़न क्या है रविंद्र? One reason is that now there is a realization that the childhood memories and experiences, they have a more impact on your mind and it lasts longer in your life. So parents are aware of this, so they don't want to disturb the child. So probably as per the knowledge circles and research, it has been proved
कि जिस तरह का बिहेवियर बच्चों के साथ बचपन में किया जाता है उसका लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट होता है। अगर उनको मारा जाता है या उनके साथ बहुत ज़्यादा सख्ती या उन्हें बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में बंद करने की कोशिश की जाती है बिना उन्हें रियलाइज़ कराए समझाए, टॉर्चर या इवन स्कूल में जो स्केल से मारते थे, हाथ पे 5 स्केल्स आ गई, तो वो सब जो है अभी रिसर्च के हिसाब से बच्चों के लिए बुरा है, गलत है, वो उनके ग्रोथ में हेल्प नहीं कर रहा है। एंड दिस इज सेम विद इमोशनल इंटेलिजेंस। द रिसर्च सेज दैट द मोर इंटेलिजेंट यू आर इमोशनली, you will certainly lead your life better. And assertiveness and managing your communication is part of emotional intelligence. How do you manage your communication in a manner that you still manage your relationship, not lose that person, and yet be successful? Maybe not today, but with a little bit of patience and tolerance, tomorrow. With a little bit of practice, with a little bit of setting down your own focuses, certainly. It is not just 1 year that I am practicing this. It's been 13 years for me now. And there are lots of senior people sitting over here. With time, with lots of knowledge circles coming around, you see lots of things happening in your life. Maybe आज आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा और आपको हो सकता है कुछ उल्टे रिजल्ट्स भी मिल जाएं जब आप इसको प्रैक्टिस करने चलिएगा, लेकिन द मेन थिंग इज दैट एटलीस्ट यू आर नॉट डिससैटिस्फाइंग योर सेल्फ एंड योर इमोशंस. You will get the result. That is for guaranteed. We were talking about this. This is basically an iceberg. टेक्निकली हम इसको बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन आपके लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि ये आइसबर्ग है और इसका 1/3 पोर्शन जो है आपको दिख रहा है, विच इज़ योर IQ, which as per the formal education, as per the exposure which you get in your education and your training and your various kinds of subject knowledge, आप develop करते हैं. EQ काफ़ी कुछ hidden है. Yes, and in fact EQ जो है आपके experiences, आपकी kicks life में जो होती हैं, आपके relationships, इनसे काफ़ी हद तक आपको develop करता है. As you will grow, you will find yourself more mature. So many psychologists say this, that as you will grow on and your relationships and your socialization, this all increases, enhances, you will find yourself more intelligent, emotional wise. So this is going to certainly get enhanced, but if you feel that you are not really benefiting and you're not being able to identify your own emotions, then you need to modify that behavior and change it. Yes. Now, there are 4 main parts of emotional intelligence which we normally call as self-awareness, knowing about our emotions. Like if I would ask you certain emotions, what are certain emotions? Happy, as you said? Yes. कोई एक emotion? Threat, fear. Yes, Nikhil? Anger. Satisfaction. Yes. This side, Pavaskar ji? Anxiety, stress. Not getting anxiety. Wow, being cool. Dissatisfaction. Lisa? Jealousy. Yes. Bharat? Feeling satisfied. Jay? Satisfaction. Giving a hug is what? कौन सा emotion आता है? Happy, खुशी होती है, warmth feel होती है. Yes. Happiness. Worrying tendency. अब अगर मैं ये सबका एक लिस्ट बनाऊं जो आपने इमोशंस शेयर किए मेरे साथ, there are hardly 7-8 emotions. And if you go deeper into the study, there are in detail 22 kinds of emotions. 22 kind of emotions. If somebody wants to read about them, you can go on Google and type emotional guidance system. There are 22 types of emotions which we can guide inside us and learn a lot about them. It's by Esther Hicks. ESTHERHICKS. Esther Hicks. उनका ये सिस्टम है, इमोशनल गाइडेंस सिस्टम, EGS. आप गूगल पे टाइप करेंगे, आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसके ऊपर. नाउ इफ़ यू वांट टू लुक इनटू योर इमोशंस, यू नीड टू गो थ्रू दीज इमोशंस एंड अंडरस्टैंड कब आपको कौन सा इमोशन फील होता है. लाइक अभी की बात करूँ मैं, तो अभी आपको कौन सा इमोशन फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है. यस. जय तो मेरे पर गुस्सा हो रहा है. हाँ, आज तो निमिषा ने मुझे 40 साल की उम्र में
I'm mobilized. Yes. Relaxed. अच्छा लग रहा है सब. We are having a participative talk. We are not judging here anything for anybody over here. Please keep this in mind. We are just discussing it so that आप अपनी कोई भी thoughts को share करिए. I don't know हमारे दूसरे speakers कैसे conduct करते हैं talks, but this is the way I do my talks. In corporates also and here also. I make it a whole kind of a discussion. हम लोग खूब बातें करने आए हैं. ये नहीं ज़रूरी है कि मेरी क्या डिग्री है और आपकी क्या डिग्री. ज़रूरी ये है कि इस टॉक के बाद आपको इतनी सी भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, चाहे वो, मैं तो इसको फ्री टॉक भी नहीं कहती हूँ. आपने अपने 40 मिनट दिए मुझे. कैन आई रिटर्न बैक टू यू दोज 40 मिनट्स? इट्स नॉट क्वान्टिफाइड एट ऑल. वो मैं कैसे पैसे में उसको तोलूँ और उसको आपको वापस करूँ, आई डोंट नो दैट. फॉर मी इट्स वैल्यूबल. People say these are free talks and पता नहीं हम तो जाएंगे नहीं जाएंगे. I don't call them free talks. I call them it's very valuable. You're giving 40 minutes of your life to me, discussing with me, talking to me. I think it just cannot be replaced by anything. क्या ये जो 3:30 से लेके अभी तक का समय है क्या वापस आ सकता है? So time is the most irreversible criteria we have. So I think it's not free at all. It's like I have so many people who have come from very far off also. So it's like for me it's not free at all. It's very valuable. So जब हम emotional intelligence की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ है ज़रूरी awareness. What are the emotions you often feel? Like typically अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो कि हमेशा बहुत चिड़चिड़ करता रहता है, irritated रहता है या बात पे गुस्सा हो जाता है, उसको आधे घंटे पे पूछते रहो, what are you feeling just now? How are you feeling just now? Yes, that is the denial. Irritation is the first symptom of denial. Resistance. अगर किसी को आप ये रियलाइज़ कराइए कि भाई ज़िंदगी कैसे खुश गुजरेगी जब आप खुश फील ही नहीं करते. पूरे दिन आप चिड़चिड़ करते रहते, कभी काम वाली, कभी ये वाला, कभी वो वाली, कभी इसने ये किया, कभी उसने वो किया. You're always irritated with life. Naturally, end of the day also you are stressed out. You're not happy. So just like a conductor, ये बस किधर जाएगा? Evening जो और फर्स्ट स्टॉप टू लास्ट स्टॉप, ये बस किधर जाएगा? या तो ये जो कंडक्टर है, अभी थोड़े दिन पहले मैं अपनी किसी फ्रेंड के साथ ट्रैवल करी थी. यहाँ पे एक बस चलती 3 नंबर, बहुत ही फेमस बस है, वो हमारे मसगांव से चलती है. एंड उसके करीब 2-3 कंडक्टर्स हैं. कभी ट्रैवल करो तो यू गेट टू नो देम. वन ऑफ द कंडक्टर इज़ वेरी फनी. हमेशा हंसता रहता है, हमेशा यू नो यू विल फाइंड हिम इन अ रियल गुड मूड. कोई उससे कुछ बहुत ही टेक्निकल सवाल पूछेगा ना, ये यहाँ रुकेगी क्या, तो जवाब क्या होगा? आज तक तो रुकती आ रही है भाई साहब, आगे का तो ज़िंदगी देखा नहीं मैंने. आज कम से कम 20 साल के करियर में रुकती आई आज तक. So the way he'll say things, everybody will laughing, you know. And जो पूछने वाला है उसकी भी anxiety कम हो जाती है. तो that approach of answering is different. क्योंकि ये जो सवाल है उसको सुबह शाम लोग पूछते होंगे, मतलब कितने लोग और कितने बल्क में पूछते होंगे, और चांसेस आर कि वो कितना इरिटेट हो सकता है. बैंकिंग इंडस्ट्री में ये बहुत आता है. Right from day morning till evening we have to manage the staff and the customers. Yes. And customers तो typically. Customers are coming with all different problems and we have to study. So the most interesting part is कि खाली बैंकिंग की बात नहीं है, आप कस्टमर केयर की बात करिए. जैसे मैं आपको अपने करियर की बात बताऊं, मेरे से कम हज़ारों लोगों ने ये बात पूछी होगी, मैडम आप फेस रीडिंग करती हैं? एयरपोर्ट पे पूछते हैं लोग, बस स्टैंड पे पूछते हैं, ट्रेन में पूछते हैं, कोई जगह नहीं छूटी, ट्रेनिंग सेशन में पूछते हैं, किनारे ले जाके पूछते हैं, मैडम आपसे बहुत एक अर्जेंट बात पूछनी है. और साइड में जाओ तो पूछेंगे आप फेस रीडिंग करती हैं? नहीं, ये एक थॉट है, ये एक मिथ है साइकोलॉजी को लेकर कि साइकोलॉजिस्ट डू फेस रीडिंग. आई डोंट इवन नो, आई फ्रैंकली डोंट नो कि आपका फेस स्माइल कर रहा है तो क्या अंदर फील हो रहा है. मैडम है क्या ऐसा? बिल्कुल. बॉडी लैंग्वेज. यस, बॉडी लैंग्वेज में एक माइन्यूट पार्ट है फेस, एंड दैट कैन बी फेक्ड. दैट कैन बी इजीली फेक्ड. अगर आप इस सेशन में बहुत बोर हो रहे हैं और फिर भी आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत इंटरेस्टिंगली अच्छे से देख रहे हैं, मुझे नहीं पता आप बोर हो रहे हैं.
मुझे नहीं पता, मुझे तब पता लगेगा कि शायद आप बाद में आके किसी और से नीचे कहें, ओह बहुत पकाया उन्होंने यार आज तो, क्या है यार। या फिर अभी जैसे जय यहाँ स्माइल कर रहा है, बाद में मुझे टेक्स्ट करके बोलेगा, मैडम आप जो कह रहे थे मैं अग्री नहीं करता उस पर, सुन लिया मैंने इतने लोगों के बीच में, ठीक है ना। तो बहुत खींचा। तो कहने का मतलब ये है, ये एक बहुत ही मिसलीडिंग थॉट है कि किसी का फेस रीड करके हम उसकी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ बता सकते हैं या उसके आगे के फ्यूचर के बारे में बता, इवन हाथ की रेखाएं बदलती हैं, ऐसा कहा जाता है, हाथ की रेखाएं बदलती हैं। Okay, let us revert back to this. Yes. So I was talking about awareness. One is knowing about your emotions, कि आपको किस किस तरह के emotions feel होते हैं। तो आप ये exercise अपने साथ ही कर सकते हैं। This is a very simple thing I'll tell you. In the morning when you wake up, कई बार हम अलार्म लगाते हैं और सही समय पे नहीं उठते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, सुबह ही उठते में इरिटेशन होता है, शिट यार आज तो आधा घंटा, आज तो ये ट्रेन छूट गई, आज तो वो मीटिंग थी नहीं पहुंच पाऊंगा, आज तो कुछ तो है गड़बड़। तो यू डोंट, दैट फीलिंग इटसेल्फ इज नॉट गुड। मॉनिटर योरसेल्फ, ask yourself in the morning the first question, how are you feeling? You don't need to ask anybody else. Ask yourself, how are you feeling about the day? This is a day which is starting, it's a bright sunny day, God has given you life, eyes, hands, सब कुछ अपनी जगह पर हैं, कुछ बीमारियां भी हैं साथ में, it's okay, लाइफ है, उम्र है, बीमारियां हैं, रिश्ते हैं, सब है साथ में है, but ask yourself, how are you feeling? Every 1 hour, initially start करने के लिए, every 1 hour keep asking yourself, how are you feeling? And some of my patients even maintain a diary on this. एक घंटे में वो एक अपने आप से पूछते रहते हैं और उसमें जवाब लिखते हैं। एट 10 o'clock आई वॉज फीलिंग ओके, थोड़ा ठीक लग रहा था, पर 11 बजे मुझे बहुत एंशियस फील हो रहा था कि शायद बैंक में बहुत भीड़ होगी और मेरा काम आज होगा कि नहीं होगा, या मेरा चेक मैंने डिपॉजिट किया, पता नहीं 2 दिन तो लगे जाएंगे उसको क्लियर होने में, और वो EMI की किस्त आने वाली है, कहीं बाउंस ना हो जाए। तो 11 बजे मेरी एंग्जाइटी जो है, ठीक है, 12 बजे तक मुझे पता लग गया कि चेक क्लियर हो गया था, तो आई वॉज फीलिंग वेरी रिलैक्स्ड, वेरी नाइस, यू नो। एंड यू नो वाइफ ने भी बताया कि उसने आज भिंडी की सब्जी बनाई है, मुझे बहुत अच्छा लगा। बैंक में फ़ोन करके बताया उसने, आज मैंने प्याज वाली भिंडी बनाई है आपके लिए, जल्दी आ जाइए, बहुत अच्छा फील हुआ ना, मेरी फेवरेट सब्जी है ना। मैंने उसको बोला मेरे लिए रखना, हाँ अच्छे से खा मत जाना सब। वेरी सिंपल थिंग्स इन लाइफ, आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल्स ऑफ वेरी सिंपल थिंग्स। बहुत टाटा बिरला या यश चोपड़ा बनने की ज़रूरत नहीं है, जो हैं आप उसी में आप अपनी फीलिंग्स को मॉनिटर कर सकते हैं कि आपको छोटी छोटी चीज़ें जो दिन भर में होती हैं, जैसे हम में से कई लोग रिटायर्ड बैठे हैं यहाँ पे, अगर हमारे पोते पोती ने किसी आगे हमसे बात करी, गोदी में चढ़ गया, हाउ आर यू फीलिंग? व्हाट इज़ द फीलिंग? अच्छा फील होता है, बहुत खुशी फील होती है। देखो छोटा सा था, अब चल रहा है, अभी उंगली पकड़ के चल रहा है, अभी दादा बोला, अभी बाबा बोला, अभी दे दो बोला, उसको हमने एक पैसा दिया तो वो चल रहा है। इट्स सच अ सिंपल फीलिंग, दीज आर ब्यूटिफुल फीलिंग्स ऑफ योर लाइफ। Learn to monitor these feelings. Learn to monitor these feelings so that you can become emotionally aware. हम लोग बोलते हैं ना कि बड़ा स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, अरे अब तो भगवत भजन मत करिए प्लीज़, आप अपने प्रति अवेयर होइए। सुबह उठे थे मॉर्निंग में तो क्या फील कर रहे थे, 2 घंटे बाद क्या फील करें, 3 घंटे बाद क्या फील करें, 4 घंटे बाद क्या फील करें, एंड जस्ट मेक इट अ पॉइंट दैट यू फील गुड। आए नहीं, हाँ कम इन। सो जस्ट मेक इट अ पॉइंट, रात को सोने से पहले अपने से पूछिए कि पूरा दिन कैसे फीलिंग्स आपने फील करी। दिस इज इमोशनल इंटेलिजेंस। ये फर्स्ट स्टेप है कि हम पहले अवेयर हों अपनी फीलिंग्स को लेके कि व्हाट डू वी फील द होल डे। और अगर आपको एक दिन नहीं होता है, एग्जाम्पल आपको एक दिन का नहीं समझ में आता है, डू इट फॉर अ वीक, डू इट, गिव योर सेल्फ टाइम, मंडे टिल फ्राइडे, मॉनिटर योर फीलिंग्स, सी हाउ कैन यू लर्न टू डिस्क्राइब योर फीलिंग्स। एंड बहुत अच्छा एक तरीका ये है कि आप अपने किसी दोस्त को या अपनी वाइफ को या किसी करीबी इंसान को इसमें शामिल कर लीजिए, जो कि आपकी फीलिंग्स के बारे में आपसे बात करें। यू नो व्हाट, 3 बजे मेरे कुलीग का फ़ोन आया, मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों अच्छा नहीं लगा? अरे यार बॉस ने उसको रेफरेंस दिया, मेरे को नहीं दिया।
या उसको मेल पे अप्रिसिएट किया, मेरे को नहीं किया। ये कितनी छोटी सी बात है, पर यही फीलिंग क्योंकि हमने आइडेंटिफाई नहीं की और ये फीलिंग हमने किसी से शेयर नहीं की, ये क्या हुई? सप्रेस हो गई, सप्रेस हो गई, इसको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला और ये किसी न किसी दूसरे फॉर्म में कहीं और बाहर आएगी। शायद आप कैंटीन में बैठे हैं तो अपने प्रोफेशनल फ्रेंड्स के साथ अपने बॉस की बुराई कर रहे हैं, या किसी पुराने इंसिडेंट्स को लेके आप नाराज़ हैं, तो वो एक्चुअली पुराना इंसिडेंस तो है ही है, उसके अलावा ये लेटेस्ट इंसिडेंस जिसमें आपको कोई एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी नहीं हुई, द फीलिंग्स आर नॉट हैप्पी एंड आपने वो फीलिंग्स किसी के साथ शेयर भी नहीं की। तो वेंटिलेशन इज हैपनिंग बट इन अ वेरी नेगेटिव मैनर। अब कैंटीन में आपने जिस प्रोफेशनल के साथ अपनी बुराई की है बॉस की, वो बात बॉस के कान तक पहुंचनी है, और पहुंचनी है तो फिर बॉस भी तो इमोशनली ब्लंट होता नहीं है, उसकी भी कुछ फीलिंग्स आएंगी और फिर आप बोलते हैं अरे यार पता नहीं क्यों मेरे से तो पहले दिन से दुश्मनी निकाल रहा है, ये जो बॉस है ना ये तो मेरे से पहले दिन से दुश्मनी निकाल रहा है। क्यों? आपको क्यों नहीं पता है कि आपको उसके बारे में अच्छा फील नहीं होता और आपने उससे कहा नहीं, और उसको आपके बारे में अच्छा नहीं फील होता बिकॉज उसने दूसरों से सुना है। ही इज गेटिंग रॉन्ग रिपोर्ट्स, ही इज गेटिंग रिपोर्ट्स विच यू आर गिविंग हिम। रादर बेटर अगर आपको ये तकलीफ थी कि उसने आपको कोई अप्रिसिएशन नहीं दिया या मेल नहीं किया जो करना चाहिए था, यू कैन गो एंड मीट योर बॉस अलोन। मोस्ट ऑफ अस डोंट डू इट, मोस्ट ऑफ अस आर वेरी स्कैर्ड, फियरफुल, नौकरी चली जाएगी, बॉस बुरा मान जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, अगली बार से हमसे बात नहीं करेगा, अप्रेजल डाउन हो जाएगा हमारा, वेरियस थिंग्स, यू नो, वेरियस थिंग्स। That's the main thing, because in industry, you just said that people are irritated. If you look at it, basically in meetings, which in my this career I've seen, in meetings is basically your seniors are more irritated when you give them a presentation or give them facts. Since I come from the banking background, now they are more irritated and they form a perception. So they always, this perception always works when it comes in appraisals. And that creates bad memories. So what I actually wanted to come to you was, how do I erase my bad memories and how do I counter his irritation, because his behavior is affecting my career. That's one thing. So now so many times people come and ask me that okay, now in today's world, now in Nimisha, from you or from other ways we are getting to know about emotional intelligence, पर अभी पिछली जो 30 साल 35 साल हमने गुजार दिए उसमें तो हमने कईयों से पंगे ले लिए, because we were not aware about our feelings, we were not aware about his feelings, her feelings, their feeling, कई चीज़ें। How do we erase that? Now we cannot erase that. I know हमारा बस चलता तो we would have a magic wand in our hand and किसी की डेथ हुई है तो उसको वापस जिंदा कर देते, है ना। स्कूल में अगर 40% मिला था तो उसको 80% कर देते, बिकॉज मेरे बच्चे को 70% मिल रहा हो, मुझे तो 50 मिला था, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है हमें कई बार क्योंकि हमें कम मिला। तो वी वुड लाइक टू इरेज लॉट्स ऑफ थिंग्स, वी वुड लाइक टू चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन अ पास्ट। आई वुड बी वेरी ओपन हियर एंड टेल यू दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इरेज द पास्ट, बट येस, वर्किंग ऑन दैट पास्ट इज़ पॉसिबल। Maybe there are people who are living in some communication gap with you, or they are, they have formed some impression about you. Maybe you can sit down and maintain a diary and see what have you done to deal with that issue. Write down the points. How did you try to talk to them? Did you write a mail to them? Did you go and meet them? It's always preferable to go and meet them, so that you get an exact example. And I believe the most issues which come in emotional intelligence are because of our ego. कई बार ऐसा होता है कि people think that we are at fault, but we don't think we are at fault. And saying sorry, apologizing is the biggest ego issue I come across everywhere. I won't say even about corporate people, in normal lives also. अगर हम अपनी वाइफ को, बच्चे को, मम्मी को सॉरी कहना होता है, how many of us are able to do it? None of us. अगर नमक भी एक उसमें पड़ जाता है, कभी एज ए फीमेल मेरे से किसी सब्जी में नमक पड़ जाता है ज़्यादा, तो डू आई अपोलोजाइज द फर्स्ट थिंग कि आज मेरे से नमक ज़्यादा पड़ गया यार, आई एम सो सॉरी? नो, बोलना चाहिए आइडियलिस्टिकली, पर हम नहीं बोलते। सिंपल थिंग, रोड पे जा रहे हैं, किसी से हमें धक्का लग जाता है, अगर वो गुस्से से दिखता है तो हम सॉरी बोलते हैं, अदरवाइज तो थैंक यू सॉरी स्कूल में सिखाया था,
बेचारा टैक्सी वाला इतनी गर्मी में हमें कहीं कहीं लेके जाता है, आज तक हम में से कितने लोग उतर के उसे थैंक यू बोलते हैं? लिफ्ट वाला ऊपर लेके जाता है, नीचे लेके आता है, पूरे दिन ऑफ कोर्स वो अपनी ड्यूटी करता है, पर अगर वो ना हो तो आपको कितनी तकलीफ हो जाए। तो हम जो इमोशनल वैलिडेशन है, एक्नॉलेज करना, ये हमारी लाइफ में नहीं है। तो स्टार्ट फ्रॉम देयर, या निखिल, एंड इट्स अ पर्सनल प्रॉब्लम ऑफ योर्स, वी विल डिस्कस अबाउट दिस, ठीक है? अभी तो नहीं, इसको इरेज तो नहीं कर सकते, इसका जवाब ये है। There is a terminology mentioned over here called social awareness and relationship management. So जो तकलीफ आप mention कर रहे हैं आपकी, वो that comes in relationship management. So the 4 parts of EQ. We can't erase the past, but at least after doing this emotional management, we can modify our behavior so that whatever past has happened, we can at least have less adverse effect of that. Right. So if there have been some faults or there have been some issues which have been there in our past, we can work on them rather than denying them कि अच्छा जो हो गया अब आगे काम करते हैं. Many people think like this. अच्छा ठीक है, पास तो हो गया, पास ठीक है, अब तो पीछे कौन जाए, सॉरी कौन कहे, कौन जाके अपनी इश्यूज़ को एक्सेप्ट करे, अपनी गलतियों को, बहुत बड़ा काम है सॉरी कहना, बहुत बड़ा लाइफ में काम है. वी डोंट वांट. अच्छा ठीक है, आगे नई शुरुआत करते हैं, पर आगे नई शुरुआत आप किसके ऊपर कर रहे हैं? इतनी सारी नीचे गलतियाँ पड़ी हुई हैं, उनके ऊपर कर रहे हैं. गलतियों को रेक्टिफाई या पास्ट को अंडन नहीं किया जाता है, लेकिन येस, रिलेशनशिप मैनेजमेंट कैन बी डन. What efforts are you doing in that direction is something which you can maybe write down and discuss with people around you and see. Self-management. Now, when I'm talking about self-management, there are 2 things which are there. One is that our own actions. There are certain things which are under our own actions, where हम अपने को manage करते हैं कि हमने कैसे किसी के साथ behave किया, या किसी को हमने greet किया या respect किया या नहीं किया. Yes, but the other part of it is personal competence. Now the personal competence comes from where? Where does the personal competence come from? Can anybody share? हाँ, कहाँ से आती है? एक तो within आती है, पर हमारा जो social circle है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपका एक पर्टिकुलर कल्चर है, फैमिली बैकग्राउंड है, आपको कई चीज़ें हैं एज अ रिचुअलिस्टिक सिखाई गई हैं, कई नहीं सिखाई गई. सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ मैं. बॉम्बे में हम लोग तू करके बात करते हैं, नॉर्थ में हम करके बात करते हैं, आप करके बात करते हैं, है ना? इट्स अ लैंग्वेज डिफरेंस, लेकिन फिर भी कई बार लोग इस बात का बहुत बुरा मान जाते हैं. तो अक्सर जब मैं अपनी मदर से बात करती हूँ तो मुझे ध्यान रखना पड़ता है कि मेरे मुंह से तू ना निकले, तेरा ना निकले, मेरा ना निकले, आपका निकले, हम निकले. माय मॉम स्ट्रेट अवे सेज कि यू फॉरगॉटन हूम आर यू टॉकिंग टू. व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तमीज़ नहीं रह गई बॉम्बे जाके. You are judged on that as per the competence of the other person who is in front of you. So adaptability of your actions is based on understanding सामने वाले की competence क्या है. अगर मैं ये सोचूं कि मेरी मम्मी को चेंज होना है मेरे हिसाब से, तो फिर हर फ़ोन कॉल गालियों से शुरू होगी और दुख में ही एंटर होगी, राइट? क्योंकि वो तो नहीं बदलेंगी 50 साल की उम्र में, और वो उनकी कॉम्पिटेंस है कि उनको एक इज्जत की और रिस्पेक्ट की जो डेफिनेशन है वो आपसे और हमसे आती है, और वो तू तड़ाक में बिलीव नहीं करती. वैसे हम लोग गुजरातीज़ में, हम लोग बॉम्बे की नॉर्मल लैंग्वेज जो है तेरा मेरा सब यही चलता है हमारा, जो कि डिसरिस्पेक्ट नहीं है. वो डिसरिस्पेक्ट नहीं है, इट इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ डिसरिस्पेक्ट, इट्स जस्ट अ फॉर्म ऑफ कल्चर. So the competence part is difference. I'm just giving you this example to understand कि adaptability कहाँ से आती है. आप जिनके साथ काम करते हैं, for example आपकी एक घर में जो काम वाली भी है, उसकी अपनी एक adaptability है. अब उसे अगर आप बोलेंगे सोफे पे बैठ के मेरे साथ चाय पियो, तो आप सोच रहे हैं आप उसे रिस्पेक्ट कर रहे हैं. आगे क्या चांसेस हो सकते हैं कि वो आपने घर पे नहीं है, या आप हैं तो भी वो आपके बेड पे सो रही है. आफ्टरनून नैप जो है वो, you have to understand the competence level of the other person and adjust your emotional actions as per those. Self management जिसे हम कहते हैं, हमारे प्रोफेशनल सर्कल में कई तरह के लोग होते हैं हमारे आसपास. How do you manage them?
somebody is from one part, the other is from Orissa, the other is Bengal से है, कोई कोलकाता से है. There's a varied competency there. हर एक की अपनी अपनी competency है. कोई किसी cultural background से, कोई sensitive है, कोई बहुत बिंदास है, किसी को कोई feel नहीं होता, किसी को बहुत feel हो जाता है. How do we adapt to that? That is emotional awareness. That is your self-awareness and management. कि आप किससे कैसे डील कर रहे हैं, दैट इज़ योर प्रोफेशनल अवेयरनेस एंड मैनेजमेंट. So these are the 4 parts of framework which I wanted to share with you. Now, emotions जो मैंने शेयर किए आपके साथ, एक थोड़ा सा एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको. सैडनेस कब आती है? मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कि किसी की डेथ हो गई, we've lost something. और कब आ सकती है सैडनेस? लूजिंग अ जॉब इज़ अ बिग सैडनेस. यस. और कब आ सकती है सैडनेस सर? शेयर मार्केट डाउन हो जाता है. ओए पूछिए मत. शेयर मार्केट डाउन हो जाता है. When we lose hope, हमें लगता है अब तो कुछ नहीं हो सकता. कल मेरी ट्रेन है और उसका टिकट अभी तक पक्का नहीं हुआ है, तो अभी तक मैंने होप रखी है, 4 घंटे पहले तक होप रहेगी कि वेटिंग लिस्ट शायद क्लियर हो जाएगी. उसके बाद आखिरी के 4 घंटे पहले मैं होप छोड़ दूंगी, तो फिर मैं यहीं रह जाऊंगी बॉम्बे में, फिर नहीं जाऊंगी अपने होम टाउन. जब एक्सपेक्टेशन कंप्लीट नहीं एक्सपेक्टेशन जब हमारी कंप्लीट नहीं होती है तब सैडनेस आती है. नेहा, एंगर कब आता है? Can't express what you really want. Neha is a very budding psychologist. She studied from Bangalore and I'm popularizing her. वो थोड़ा embarrassed feel हो रही है. I had invited her here to show this forum so that in future she can also give such talks and people can benefit from her. Fresher, young generation. I am promoting these kind of people around me and काफ़ी दिन से मैं उसे invite कर रही थी and finally today आज she could take out time. That's why I ran late today. It's okay. So नेहा, आप प्रैक्टिस शुरू कर दिया आपने. आप एंगर देखते हो अपने क्लाइंट्स में कभी कभी? कब आता है बताइए? Most of the time it's kabhi when they can't express what they want to. Kabhi it's because of people around them, the way they behave. So how do I handle those people's feelings? So it's about managing myself and those around. So एंगर वहाँ आता है जहाँ हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, या हमारी कोई डिज़ायर फुलफिल नहीं होती, तो हम उसे एंगर के थ्रू. Yes, so many times you hear cases of a boy putting acid on his girlfriend. या किसी लड़की पे उसने कुछ कर दिया, और उसकी ब्यूटी हैम्पर कर दी, या उसको किसी तरह से फिजिकली हैंडीकैप करने की कोशिश की, whatever, या उसको इंसल्ट कर दिया. What is that? That form of anger is a major huge frustration actually. Revenge also, yes, कि वो मेरी नहीं तो किसी की नहीं, right? Even helplessness. Helplessness can make you feel very angry. मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ. I know so many terminally ill patients of cancer who feel very angry. जब आप उनसे मिलिए तो उनकी एक्सेप्टेंस नहीं होती बीमारी को लेकर, या इवन हार्ट पेशेंट्स जिनको हमेशा अब सालों तक दवा खानी है, डायबिटीज़, सालों दवा खानी है, उनको मीठा बहुत अच्छा लगता था, अब इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं, दे जस्ट हेट इट. लेकिन एंगर कम्स आउट बिकॉज हेल्पलेसनेस होती है. अब क्या करें, अब तो हो गई है ये बीमारी. फियर, मैंने somebody said over here कि हम इसलिए एक्सप्रेस नहीं करते बिकॉज फियर होता है. फियर कहाँ से आता है? Fear is a primal instinct, right? When we are born, we are having this instinct. Like many other animals, they are also having this instinct. But if it is more, then it is sort of phobia. Then our day-to-day function is affected. But if it is reasonable thing, then it is a desirable, because there is a fear, there is a orderliness of the world. And because of fear, we are saved from many dangers. Because we take care out of fear. रवीन जी जो यहाँ एक सेंटेंस कर रहे हैं, ये एक बिलीफ है, एक थॉट स्कूल है जो ऐसा मानता है कि फियर हमारा प्राइमरी इंस्टिंक्ट है. मैं यहाँ पे थोड़ा आपको रोकूंगी एंड आई डोंट अग्री विद दैट. फॉर मी फियर एंड इमोशनल इंटेलिजेंस आर इक्वली लर्नेबल. माई सन इज़ 5 year old एंड ही डजंट हैव एनी फियर. उसको अभी तक अंधेरे से डर नहीं लगता, कुत्ते से डर नहीं लगता, स्नेक को पकड़ लेता है जाके, नज़र लगने से डर नहीं लगता, रोड पे चला जाएगा. नाउ यस, या If we become totally fearless, यस, then there will not be orderliness. दिस इज़ फियर, दिस इज़ फियर जो आप बोल रहे हो ना, ये सेंटेंस. इफ़ वी बिकम fear of punishment, people जी. are not committing crimes.
I will not say that it is fear. I would say that law is a form of keeping check on your behavior. It is not fear. And fear can never be long lasting. Fear can never bring about any change. अगर ऐसा होता तो औरंगजेब के जीते जी लोग उससे रिबेल नहीं कर देते. People were very, very fearful. Hitler, how did he die? People were very fearful of him. ओ अभी जो लेटेस्ट मरा है कौन है वो? सद्दाम हुसैन. कितना लोग फियर करते थे उससे. सो फियर कैन नेवर बी अ रूलिंग इमोशन इन आवर लाइफ एंड इट इज़ नॉट अ प्राइमरी इंस्टिंक्ट. देयर आर वेरियस स्टडीज़ विच आर कमिंग अबाउट इट नाउ. आई थिंक वी नीड टू रीड मोर ऑन इट. मैं किसी को भी कॉन्ट्राडिक्ट या किसी को डिसग्री नहीं करती, लेकिन येस आई हैव माई ओन फैक्ट्स इन प्लेस. रवीन जी, हम लोग नोट शेयर करेंगे आपस में. मेरा ऐसा मानना है कि हम